Good morning, class 9th student. Today we solve exercise 2.3. So first question of exercise 2.3 is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. So here we use remainder theorem for finding the remainder of this polynomial when this polynomial is divided by x plus 1. So what is the procedure of remainder theorem? First we write down in our solution, let px equal to, let px equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. Let x plus 1 is factor of px. Write down let x plus 1 is a factor of px. So x plus 1 is equal to 0. X equal to minus 1. Putting x equal to minus 1 in px. px में x equal to minus 1 put कर दो. So p minus 1. p minus 1. Or in place of x, you write down minus 1. So write down minus 1 cube plus 3 minus 1 square plus 3 minus 1. Whole cube of minus 1 is minus 1 plus 3 into whole square of minus 1. Whole square of minus 1 is 1 minus 3 plus 1. So minus 1 plus 3 minus 3 plus 1 0. So remainder is और Rx इक्वल टू P माइनस 1 और P माइनस 1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी. There are two methods finding the remainder when a given polynomial is divided by another polynomial. First method is a direct division method. This is the polynomial and we divide this polynomial by x plus 1. So directly we find out the remainder. Another method is a remainder theorem. So how we apply a remainder theorem? We consider this polynomial as px and we write down x plus 1 is a factor of px. So x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1. Putting x equal to minus 1 in px. x equal to minus 1 हम किस में पुट कर देंगे? px में. तो minus 1 यहाँ हमने पुट किया पॉलिनोमियल में. Then we get the value. That value is the remainder. So like that you solve the remaining sum. So we solve fourth part. x plus pi. The polynomial is same, x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and x plus, now we write x plus pi because this polynomial is divided by x plus pi, so we take x plus pi as a factor. So x plus pi equal to 0. X equal to, putting x equal to minus pi in px. तो अब यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम लोग? माइनस पाई. तो व्हेन वी पुट माइनस पाई वी राइट डाउन माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. सो वी गेट क्यूब ऑफ माइनस पाई इज माइनस पाई क्यूब. Square of this is 3 pi square minus 3 pi plus 1. So this is the remainder Rx.
यही रिमाइंडर आर एक्स हो जाएगा। रिमाइंडर लिखो आर एक्स इक्वल टू पी माइनस पाई, और पी माइनस पाई की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। दिस इज द रिमाइंडर। लास्ट पार्ट वी ऑल्सो सॉल्व, फिफ्थ पार्ट। फाइव प्लस 2 पाई। In fifth part we divide 5 plus 2x. So we write down 5 plus 2x is factor of px. So 5 plus 2x equal to 0. 2x equal to minus 5. X equal to minus 5 upon 2. Putting x equal to minus 5 upon 2 in px. So we write p minus 5 upon 2 minus 5 upon 2's cube plus 3 minus 5 upon 2 square plus 3 into minus 5 upon 2 plus 1. Minus 5 cube is 125 upon 8. 3 into 25 upon 4 minus 15 upon 2 plus 1. 125 upon 8 plus 75 upon 4 minus 15 upon 2 plus 1 upon 1. We take the LCM, that is 8. 8 ones are 8. 4 twos are 2 into 75. 2 4s are 15 4s are 60 plus 8. ठीक है, 125 150 में 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 प्लस 8 अपॉन 8। ठीक है, ऐड कर दो 125 90 8 8 5 13 3 9 और 10 12 223 अपॉन 8। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। हियर वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय 5 प्लस 2x। तो 5 प्लस 2x से डिवाइड करेंगे। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, सो 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2. नाउ वी पुट x in place of x minus 5/2. So we write here minus 5/2's cube plus 3 minus 5/2's square plus 3 5/2 plus 1. So cube of minus 5/2 is 5 into 5 into 5, 125, 2 2 जा 4 2 जा 8, but here the sign is negative. साइन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन होने से थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग कर दो यहाँ की बात की कैलकुलेशन। तो 125 और 150, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 25 माइनस 60 प्लस 8 अपॉन 8। 60 और 25 या 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 8 5 13 3 33 33, तो माइनस 27 upon 8. So this is the value of p minus 5/2, p minus 5/2 or p minus 5.2, and this is the remainder of this polynomial. I hope you understand all the sums which is given in question number first. So we solve second sum of this exercise.
Question number second. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x plus a 6x minus a is divided by x minus a. We have to find out the remainder. So let in solution write down let px equal to x cube minus ax square minus 6x minus a. Let x minus a is factor of px. So x minus a equal to 0, x equal to a. Putting x equal to a in px. So pa equal to a cube a into a square minus 6a minus a. So we get a cube minus a cube minus 6a minus a. This is cancelled. At last we get minus 7. ये वाला साइन देख लो, ये कैसा है 6 प्लस का साइन है, तो 6a माइनस a 5a. That is the remainder. Rx आंसर शीट में चेक कर लीजिए. 2.3 क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5A करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग. Check whether 7 plus 3x is factor of 3x cube plus 7x. 3x cube plus 7x. Solution. Write down let px equal to 3x cube plus 7x. Let 7 plus 3x is factor of px. So 7 plus 3x equal to 0, 3x equal to minus 7, x equal to minus 7 upon 3. Putting x equal to minus 7 upon 3 in px. So we get p minus 7 upon 3 equal to 3 into minus 7 upon 3 is whole cube plus 7 into minus 7 upon 3. 3 into minus 7's cube is 7 7 is 49, or 49 into 7, 7 9 is 63, 6 7 4 the 28, 6 34, 343. So this is minus 343 upon
3 3 जा 9 3 जा 27, and this is 49 upon 3. So 27 is cancelled from 3, we get 9 minus 343 upon 9 minus 49 upon 3, we get the LCM 9. We write down 343, 3 3 ja 9, so we write 3 9 ja 27, 2 3 4 ja 12, 13 14, 343, 147, 10, 9. Our answer is minus 490 upon 9. Thus 7 plus 3x is not factor of in this question we check that 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. So how we check? By using remainder theorem, we find remainder. If remainder comes out 0, then it is a factor of the given polynomial. If remainder not comes out 0, then this is not a factor. So here remainder comes out minus 490 upon 9. Thus 7 plus 3x is not a factor of given polynomial px. So 7 plus 3x is का factor. In next session we solve exercise 2.5. I hope you understand whole session. Thank you.